यस, सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टेशनरी वेव्स के कुछ प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर बेस्ड कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस और फोर्स वाइब्रेशंस, फ्री वाइब्रेशंस, ये सब देखा था। तो अभी आज के लेक्चर में हम उसके आगे का जो concept देखेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमको डिस्कस करने थे, जैसा कि सोनोमीटर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अभी आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट द मेल्डेज एक्सपेरिमेंट एंड द resonance tube experiment. Okay, so first of all we'll discuss about the Meldage experiment. So here okay, so in case of the Meldage experiments, there are two positions actually. First is the parallel position and the second is perpendicular position. देखो यहाँ पे perpendicular position और दूसरा होता है parallel position. तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो देखो ठीक से कि इसमें इन केस ऑफ द parallel position, sorry, perpendicular position, the tuning fork is kept in such a way. Suppose ये tuning fork है and it is kept in this way here, such that the vibrations of these tuning forks will be perpendicular to the length of this string here. तो ये जो string का length है तो वो ऐसा है suppose, ठीक है। string जो है वो इस तरह से बंधा हुआ होता है, उसके ऊपर एक पुली और यहाँ पे एक वेट अटैच्ड किया हुआ होता है। बट इसमें जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो हॉरिजॉन्टल है और जो वाइब्रेशंस है स्ट्रिंग फोर्क के वो परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है, तो इसीलिए उसको परपेंडिकुलर पोजीशन बोलते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ द पैरेलल पोजीशन, तो पैरेलल पोजीशन में क्या होता है, देखो ठीक से, द ट्यूनिंग फोर्क इज सच अ वे दैट इट्स वाइब्रेशंस विल बी पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ के हिसाब से ट्यूनिंग फोर्क के वाइब्रेशंस कैसे है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, उसके हिसाब से ये पैरेलल और परपेंडिकुलर पोजीशन डिसाइड होता है। ये सपोज पुली है और इसके ऊपर यहाँ पे वेट अटैच किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। अभी इसमें होता है ऐसा ना कि whenever this tuning fork is just vibrated, what happens is the string also starts vibrating. So string के अंदर भी कुछ ना कुछ waves प्रोड्यूस होंगे और ऑब्वियसली जो जाने वाले वेव्स और आने वाले रिफ्लेक्ट होके वापस आने वाले वेव्स, इन दोनों के बीच में सुपरपोजिशन होने की वजह से यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होंगे। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन द रीजन हियर। तो यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होने वाले हैं स्ट्रिंग के ऊपर और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स भी फॉर्म होंगे। देखो जितने भी लूप्स फॉर्म होंगे उसके हिसाब से उस मोड में ये स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट करता हुआ माना जाएगा और उसकी वजह से उसका जो फ्रीक्वेंसी है, अब देखो यहाँ पे होता है ऐसा ना कि ट्यूनिंग फोक का जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं कैपिटल एन और वायर का जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं स्मॉल एन। इवन यहाँ पे भी ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी होगा कैपिटल एन और वायर का जो फ्रीक्वेंसी है तो वो होगा स्मॉल एन। Here it happens that when the tuning fork completes one full oscillation, the string also completes one full oscillation, and that's why we can see that the frequency of tuning fork is going to be the same as the frequency of string or wire here. But already we know that if suppose p number of loops are formed here, अगर p loops form होंगे तो frequency wire का frequency कितना मिलता है हमको, तो it is given by the formula p times of the fundamental frequency which is simply 1/2L root t by m बराबर है, और mu we can say, mu मतलब the linear density। ओके अभी इसमें ये देख समझ सकते हो, तो ये जो है वो वायर का फ्रीक्वेंसी है, बट अभी ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी और वायर का फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमको कैपिटल एन जो है तो वो भी उतना ही मिल जाएगा जो कि p टाइम्स 1/2L into root t by mu which will be actually p by 2L into root t by m, ओके, और mu।
yes, and hence we can say this, if we suppose square on both sides, तो इसमें अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमको मिलेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर into t by mu, okay, and hence tp square here, t into p square, यहाँ पे t मतलब क्या है पता है, समझा ठीक से, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये जो टेंशन होता है स्ट्रिंग के अंदर का, उसको हम यहाँ पे t बोल रहे हैं, ठीक है। तो t into p square becomes actually equal to, ये पूरा जो है वो अगर हम उस तरफ लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमको मिलेगा tp square is equal to 4n square l square into mu. Okay, this is the value of tp square obtained in case of this perpendicular position. But in case of this parallel position here, what happens is the frequency of tuning fork and the frequency of wire are not equal. Equal नहीं होते वो, बल्कि उन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है ना। क्या डिफरेंस होता है उनके बीच में, देखो ठीक से, तो डिफरेंस ये है कि ये ट्यूनिंग फोर्क जब दो ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है तब जाके स्ट्रिंग अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। वी कैन सी इट फ्रॉम दिस डायग्राम। सपोज ये ट्यूनिंग फोर्क जो है वो बाहर मुड़ गया, फिर वापस अंदर मुड़ गया, फिर वापस बाहर, वापस अंदर, ये देखो 5 पोजीशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। सो व्हेन दिस ट्यूनिंग फोर्क विल जस्ट बेंड इनवर्ड्स, तो जब वो इनवर्ड बेंड होगा तो उस समय क्या होगा, स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, और उसकी वजह से स्ट्रिंग का जो पोजीशन है वो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। स्ट्रिंग विल बी जस्ट स्ट्रेच्ड लाइक दिस, इट विल बी परफेक्ट हॉरिजॉन्टल इन दिस वे, ठीक है। बट नाउ व्हेन दिस ट्यूनिंग फोर्क इज जस्ट बेंड आउटवर्ड्स, तो prongs of tuning fork when bent outwards, what happens is the string just slackens like this, तो ये string जो है वो slacken हो गया। Again when the tuning fork, prongs of tuning fork bend inwards, the string will become straight and it can be shown horizontally like this, no doubt, okay. But when once again the prongs of tuning fork just bend outwards, the string will just slacken, but this time it will slacken upwards, it will form a convex surface like this, तो इस तरह से वो convex बन जाएगा, क्योंकि it's already moving upwards, तो वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा और उसकी वजह से, उसके इनर्शिया की वजह से वो ऊपर ही जाना कंटिन्यू करेगा और उसकी वजह से ऊपर की तरफ स्लैक हो जाएगा और फिर वापस यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा जब ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स फिर से एक बार अंदर की तरफ बेंड होते हैं। तो इन 5 पोजीशन में अगर देखते हो ठीक से, तो ट्यूनिंग फोर्क ने 2 वाइब्रेशंस कंप्लीट किए हैं, देख सकते हो ठीक से, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क पहले अंदर में था प्रॉन्ग्स ट्यूनिंग फोर्क के, फिर वहां पे बाहर में गए, फिर अंदर आए, यहाँ पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया ट्यूनिंग फोर्क का, वापस प्रॉन्ग्स जो है वो बाहर गए, वापस अंदर आए, तो 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए ट्यूनिंग फोर्क के। लेकिन वायर का अगर देखते हैं तो यहाँ पे वो बीच में है, फिर नीचे गया, ठीक है, फिर बीच में आया, फिर ऊपर गया और फिर बीच में आया, मतलब वायर का जो है वो एक ही ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो वायर कंप्लीट्स ओनली वन ऑसिलेशन व्हेन ट्यूनिंग फोर्क कंप्लीट्स 2 oscillations, and that is the reason why we can say that the frequency of tuning fork here is going to be actually double of the frequency of the wire, remember। तो यहाँ पे होता है ऐसा है ना कि कैपिटल N जो है, तो कैपिटल N is actually going to be 2 times of small n, where capital N stands for frequency of tuning fork and small n stands for the frequency of the wire itself. And but as we know that this wire has a frequency given by if suppose p loops are formed in this case here, तो अगर यहाँ पे p loops फॉर्म होते हैं तो तभी क्या होगा, वायर का फ्रीक्वेंसी कितना बनेगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे the frequency of wire is once again given by the same formula, that is the frequency of wire in the pth mode, or we can say in the when p loops are formed along the stretched string, the frequency of wire becomes p times the fundamental frequency of the wire, and hence if suppose p loops are formed here in this case, then the frequency of wire will be found to be p times of 1/2l into root t by mu, okay।
एंड नाउ इफ यू जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर, n का वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देते हैं तो हमको मिलेगा n इज इक्वल टू 2 times of this p, this n, which is going to be p by 2l into root of t by mu. Correct है? And now if we just cancel out this 2 from both numerator and denominator here, then we can be able to get that n is equal to p by l into root t by mu. And if we just square on both sides, then we get this n square is equal to p square upon l square into t by mu. And from this again we can get that tp square is equal to, तो tp square का जो वैल्यू है वो कितना बन रहा है यहाँ पे n square l square mu. So this is the value of tp square in case of the parallel position. Remember, इसमें से हमको एक बात पता चलती है कि tp square in case of perpendicular position is always 4 times of, ये दिख रहा है 4, यहाँ पे ये 4 अगर हटा दो तो बाकी जो बचता है वो इधर का tp स्क्वायर ही तो है कि नहीं, देखो ठीक से. तो इसलिए हम देख सकते हैं आराम से कि this tp square in perpendicular position is always 4 times of the tp square in case of parallel position. तो देखो tp square in case of parallel position, और उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमको परपेंडिकुलर पोजीशन का tp स्क्वायर मिलेगा. तो ये बात याद रखो, if the situation is just turned changed from perpendicular position to parallel position suddenly, then the value of tp square will just become 1/4. Or if suppose the situation is changed from parallel to perpendicular, then the tp square will become 4 times like this. And if we keep this tension constant, then what will happen to number of loops? तो यहाँ पे टेंशन जो कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, और हमको मिलेगा नंबर ऑफ लूप्स इन परपेंडिकुलर पोजीशन का स्क्वायर अगर करेंगे तो दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ लूप्स स्क्वायर इन पैरेलल पोजीशन. एंड इफ जस्ट सपोज वी टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स हियर, तो अगर इस तरफ दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिलेगा हमको, number of loops in perpendicular position happens to be simply 2 times of the number of loops in parallel position, which is one of the important result to be remembered here in case of the Melde's experiment. Okay, तो यहाँ पे number of loops जो है वो parallel position में, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि number of loops यहाँ पे कितने हैं, 2 है, right? और perpendicular position में कितने हैं, 4 है कि नहीं, डबल. तो हम एक्चुअली जब यहाँ पे जो डायग्राम हमने निकाला है उसके अंदर ही हम क्लियर देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ लूप्स इन परपेंडिकुलर पोजीशन आर 4, व्हिच इज डबल ऑफ द नंबर ऑफ लूप्स इन पैरेलल पोजीशन, दैट इज 2 हियर. इट इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, बट इट हैपेंस ऑलवेज. ओके, इट हैपेंस ऑलवेज. इन केस ऑफ द परपेंडिकुलर पोजीशन, the number of loops formed will always be double to that of the number of loops formed in the parallel position. Remember. So yes, this is all about the Melde's experiment. Then again, here in this case, we have the resonance tube experiment. Okay, तो resonance tube experiment क्या बताता है, देखो ठीक से. In case of resonance tube experiment, there is a tube or a cylindrical container which containing water, and a tube is just immersed in it. तो यहाँ पे एक पाइप जो है वो होलो पाइप यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है इस तरह से, और ट्यूनिंग फोर्क्स जो है वो अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क्स यहाँ पे प्ले किए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको अलग अलग वाइब्रेशंस के फ्रीक्वेंसीज मिलते हैं. और जब हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेंथ पे इसको सेट करते हैं जो कि ऐसा होता है, so that the frequency of tuning fork will just match with the frequency of this pipe. In that case, the resonance will take place, and in that case the length of the pipe will be obtained to be L, small l. But as we know already that the antinodes are not formed exactly at the open ends, but they are formed slightly above.
so that end correction E has to be added up to the length of the pipe so as to get the correct length of the pipe, which is capital L here. So this capital L can be written to be equal to small l plus E, where E stands for end correction, and this end correction happens to be equal to 0.3 times of D. And along with this end correction, we can get this corrected length here, and in that case we can get that the in a first mode, अगर ये first mode है वाइब्रेशन का, तो यहाँ पे जो पाइप वाइब्रेट हो रहा है तो उसका जो वेवलेंथ बनेगा वो L by lambda by 4 बनेगा, करेक्ट है? lambda by 4 वेवलेंथ विल बी द, मतलब क्योंकि यहाँ पे एंटीनोड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एंटीनोड फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे नोड है, तो एंटीनोड और नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्बडा बाय 4 के बराबर हुआ करता है, तो इसलिए यहाँ पे लैम्बडा बाय 4 जो है वो एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटीनोड होगा, जिसको हम L प्लस E लिख सकेंगे, जिससे ही हमको लैम्बडा का वैल्यू मिल जाता है 4 टाइम्स ऑफ L plus E, right? And if you use this value of lambda here in case of the formula for velocity of sound in air, which is V is equal to N into lambda. Here N stands for the frequency of tuning fork. Okay, ये tuning fork जो vibrate कर रहे हैं हम, उसका frequency N रहने वाला है, तो इससे हमको मिलता है V is equal to N into lambda, where lambda is nothing but 4 times of L plus E, correct है? And this is the formula for finding the velocity of sound in air using this resonance tube experiment. ओके, यहाँ पे हमको तीन बातें मेजर करनी है. एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ट्यूनिंग फोर्क जो कि उसके ऊपर ही दिया हुआ होता है, दूसरा लेंथ ऑफ द पाइप, और तीसरा है एंड करेक्शन which is equal to 0.3 times of the diameter of the pipe. Okay, this is the direct method to find out the velocity of sound in air using this resonance tube experiment. Okay, the second method is the method of elimination. तो elimination method बोलती है उसको. उसके अंदर क्या करते हैं देखो, the water level is kept constant in this case. यहाँ पे water level उतना ही रखते हैं, सिर्फ फर्स्ट केस में जो पाइप जो है वो बहुत ज्यादा अंदर डुबो देते हैं, जिसकी वजह से most of the part of the pipe will be inside or immersed in the water and very small part will be outside the water because of, and here we keep a tuning fork here. यहाँ पे एक tuning fork हम रखते हैं और उसको वाइब्रेट कराया जाता है. And when this tuning fork is found to be vibrating in resonance, we clamp it there only and say that the first harmonic will be this pipe will be vibrating in the first harmonic. यहाँ पे नीचे पानी है, भूलो मत, ये पार्ट जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, यस. और अभी सेकेंड टाइम हम क्या करते हैं, इसी पाइप को थोड़ा ऊपर उठाते हैं ताकि उसका थोड़ा लेंथ बढ़ जाए, वाइब्रेटिंग लेंथ बढ़ जाए, और उसी ट्यूनिंग फोर्क के साथ हम उसको फिर से एक बार वाइब्रेट कराते हैं. तो देखो, द सेम पाइप हैज बीन लिफ्टेड अप टू सम डिस्टेंस अबव and the same tuning fork is made to vibrate with the same pipe but with a different length now. अभी लेंथ अलग लेंथ के साथ इसको वाइब्रेट कराया जाता है रेजोनेंस में वो भी. So how is it possible? When the resonance will take place again for the same tuning fork with the same pipe, when the tuning this pipe will be vibrating with the second mode of vibration. That means it will be vibrating in such a way that antinode will be formed at the open end, but at the closed end there will be a node, but not the just adjacent node, but one loop will be extra here in this case. तो यहाँ पे एक loop जो है वो extra हमको मिल जाएगा. ऐसे कंडीशन में वो वाइब्रेट हो रहा होगा, ठीक है. So if this tuning fork is allowed to vibrate with the same length of the same pipe with a different length, then we can say that अब देखो यहाँ पे भी ये जो एंड करेक्शन है यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, इवन यहाँ पे भी हमको ऐड करना पड़ेगा, नो डाउट. तो अगर हमने यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसको अगर हमने L बोल दिया, L2 बोल दिया सपोज फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये L1 रहने वाला है, बराबर. ये जो है दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी L1 and plus end correction has to be added in the length so as to make it correct, and here also we'll have to add this end correction in this L2 so as to make it correct, and that will be the distance actually. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एंटीनोड और नोड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो हमको पता है लैम्बडा बाय 4 हुआ करता है, करेक्ट है. and this will be the distance between the antinode and node
So this lambda by 4 actually will be L1 plus E. Are you getting this? And in this case here, the distance between the antinode and node will actually be equal to 3 lambda by 4 in this case. Why? Because the pipe is itself is vibrating in the third mode. Because second mode. Because एक लूप एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्बडा बाय 2 होता है, बराबर। और वो लैम्बडा बाय 2 और ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली लैम्बडा बाय 4 हुआ करता है। तो ये लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 4 comes out to be 3 lambda by 4, and that is we have put it here. So here this 3 lambda by 4 distance will be just sum of this L2 plus E, we can say, and hence we can construct two equations here in this case. तो यहाँ पे जब elimination of end correction वाली मेथड की बात चलती है तो यहाँ पे हमको दो इक्वेशंस यूज करने पड़ते हैं, दो इक्वेशंस फॉर्म करने पड़ते हैं। The first equation is simply obtained from this diagram here, which is simply lambda by 4 is going to be equal to L1 plus E. That's it. So this is the first equation, and the second equation here is obtained from this diagram here. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? देखो 3 lambda by 4 is going to be actually equal to L2 plus E. This is the second equation. Now, if you want to subtract, want to find out this lambda from these two equations, then just multiply this first equation by 3 and then subtract it. Okay, or we can eliminate the end correction also. Just in order to eliminate the end correction, just subtract these two equations serially. सीधा subtract करना है हमको। ये देखो 3 lambda by 4 is equal to L2 plus E. Okay, and here it will be lambda by 4 is equal to L1 plus E. If you just subtract these two equations, then this minus 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 will be there, and its end correction will get just cancelled. And once we cancel with this end correction, what we are left with is here will be left with this 3 lambda by 4 minus lambda by 4, which is simply 2 lambda by 4, which happens to be actually equal to L2 minus L1, right? And 2 2s are 4, so it becomes lambda by 2 is equal to L2 minus L1, which gives lambda is equal to 2 times of L2 minus L1. And once we get this lambda, we can just use this lambda here in order to get the velocity of sound in air, which is simply V equal to n lambda, where if we just put this value of lambda here, then we can get this velocity of sound in air to be simply equal to 2n L2 minus L1 as a final formula for the velocity of sound in air in this way. And at the same time, in case of the these two equations, using these two equations, we can also find out the end correction by eliminating lambda. तो अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे 3 lambda by 4 is equal to L2 plus E है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 है सपोज। और अभी इस इक्वेशन नंबर 2 जो है ना, ये वाला जो इक्वेशन है, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो बन जाएगा 3 lambda by 4 is going to be equal to 3L1 plus 3E। क्या किया हमने? इस इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ओके, और फिर इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस आने की वजह से यहाँ पे ये पूरा 3 लैम्बडा बाय 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? सिंपली तो इस तरफ 0 बचेगा और उस तरफ बचेगा L2 minus 3L1, and here it will be E minus 3E, which is going to be minus 2E. If we take this minus 2E in this side, then we can get this as 2E. So 2E becomes equal to L2 minus 3L1, and hence E becomes actually equal to L2 minus 3L1 upon 2. This is the formula for finding this end correction here. Remember, तो end correction निकालने के लिए ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आराम से in case of the resonance tube experiment. Even if suppose there are two different tubes, okay, if suppose we have two different pipes, suppose for example closed pipes, okay,
तो दो अलग अलग पाइप्स है, दोनों का लेंथ अलग अलग है। सपोज एक का लेंथ है L1 और दूसरे का लेंथ है L2। तो फर्स्ट वाले का फ्रीक्वेंसी होगा N1 और सेकंड वाले का फ्रीक्वेंसी बनेगा N2। So what is the relationship between this L1 N1 and L2 N2? So it can be found out easily, because when this first pipe will just vibrate, its frequency N1 will be given by the formula V upon 4 times of L1 plus E, correct है? Here this E stands for end correction and V stands for velocity of sound in air. Okay, so closed pipe होने की वजह से यहाँ पे ये 4 आ गया, fundamental frequency का formula. Similarly, we can say N2 will actually be equal to V upon 4 times of L2 plus E in the same way. Now, if we just equate this V by V here, तो V का वैल्यू इन दोनों में से क्या मिल रहा है हमको? एक तरफ से हमको मिल रहा है 4N1 into L1 plus E और दूसरी तरफ से हमको मिल रहा है V is equal to 4N2 into L2 plus E, right? And now if we just equate both of these values here, then we get is 4N1 into L1 plus E, which is going to be equal to N2 4N2 into L2 plus E, correct है? And now if we just equate both of these here, then 4 gets cancelled and we are left with N1 L1 plus N1 E is equal to N2 L2 plus N2 E. Okay, and by simplifying this further, we get the end correction E to be simply equal to N1 L1 minus N2 L2 upon N2 minus N1. Okay, ये याद रखो ठीक से. In the same way here, if there are two open pipes like this, तो ये open pipes है दो, मान लो एक का length L1 है और दूसरे का length L2 है, and suppose diameter दोनों का same है, ठीक है? तो दोनों का frequency अलग अलग होगा जरूर. इसका मान लो N1 है, इसका मान लो N2 है. तो N1 can be given to be simply equal to V upon 2 times of L1 plus 2E, correct है? And N2 similarly can be given by the formula V upon 2 times of L2 plus 2E, right? And then if we just equate V from both sides, both formulas here, so V का formula इस तरफ से क्या मिल रहा है हमको? 2N1 into L1 plus 2E, और V का formula इस तरफ से क्या मिल रहा है? देखो 2N2 into L2 plus 2E. Okay, so if we just equate both of these values, then we get this 2N1 into L1 plus 2E, which is going to be equal to 2N2 into L2 plus 2E, right? And here if we just cancel these 2 from both sides, then we can just simplify this further. N1 L1 plus 2N1E is equal to N2 L2 plus 2N2E, and hence if we just simplify this further, we get this end correction to be simply equal to N1 L1 minus N2 L2 upon 2 times of N2 minus N1. ये याद रखो ठीक से. This is going to be actually the result, ठीक है ना, for open pipe, and this is only for closed pipe. तो देखो closed pipe में यहाँ पे नीचे सिर्फ N2 minus N1 आता है, जबकि यहाँ पे 2 times of N2 minus N1 आता है. वो याद रखो ठीक से, ठीक है ना. ओके, चलो ठीक है. तो मैंने आपको जो पीडीएफ शेयर किया था स्टेशनरी वेव्स का, या इन जनरल वेव्स का है, तो वेव्स के बारे में पीडीएफ एक शेयर किया था, उसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज थे, तो वो आपने स्टार्ट किया है सॉल्व करना.